Good morning, students. Hope you understand the word sickness, the stages. These are the signals which is very essential to understand. And these are the symptoms. जब आपके सिग्नल ने आपने इग्नोर करे, then symptoms have occurred of the sickness कि आपकी यूनिट सिक हो रही है. And you can explain this sickness with the help of these points also. The another way of writing for those students who find it difficult, like decline in the capacity utilization. आप अपनी कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ लिक्विड फंड टू मीट शॉर्ट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. आपके पास जो है वर्किंग कैपिटल ही नहीं है जिससे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कंडीशन में रख पाएँ. यू नो, यू हैव अ टू टाइप ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड एंड वर्किंग. फिक्स है, आपने बिल्डिंग तो ले ली. जैसे कार आप सपोज लेते, कार हो गई, बट उसको चलाने के लिए यू नीड अ वर्किंग कैपिटल जिससे आप पेट्रोल एंड ऑल ले रहे हैं. तो जब वही नहीं होगा तो आप बिजनेस कैसे रन कर पाएंगे. सिकनेस आई. एंड नॉन सबमिशन ऑफ डेटा टू द बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, irregularity in maintaining bank account, frequent breakdown of your plants, equipments, decline in the quantity of the product manufacturer, service render, etc. Then default in the payment of statutory dues like provident fund, sales tax, excise duty, etc. Then declining in your technical deficiency. Frequent turnover of the personnel in the industries also cause this type of problem. Now, some common cause leading to falling in health of the small units. All these are the symptoms and you can say signal. But basically if we ask about the cause जिसकी वजह से sickness हो सकती है, वो क्या है आपकी कोई भी sickness जो होती है सिर्फ फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से नहीं हो सकती. दे आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच cumulatively affect their company to become a sick. They are classified into two: external, exogenous you can say, and internal, endogenous. Okay, now problem in production. Problem in production यू कैन से आपके प्रोडक्शन में ही अगर दिक्कत आ रही है, आपकी मशीन ब्रेक डाउन बार बार हो रही है, पुअर मेंटेनेंस है, पुअर क्वालिटी है के रॉ मटेरियल्स आप ले पा रहे हैं, लेबर की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं है, शॉर्टेज ऑफ पावर है, lack of production, planning and controlling is not effective, and delayed in suppliers, subcontractors, poor industrial relation अगर आपके हैं. These are the indications of the problems in production. Then lack of order अगर है, ठीक है, lack of orders अगर है, क्योंकि ultimately the orders are there, then only you are going to generate a cash flows. ठीक है, like there are a number of reasons because of which orders are low, like competition is there, recession is there, low quality technical competency is there, irregular delivery, poor market efforts, and obsolescence of your particular goods or services. Then lack of raw material also. Poor supply of raw material could may be due to national or regional shortage. जो मटेरियल आपको चाहिए उसकी शॉर्टेज इतनी है, हाई कॉस्ट है, ओवर ड्यू पेमेंट टू सप्लायर है, या पुअर क्वालिटी मिल रही है आपको, अनसर्टेन सप्लायर्स हैं आपके, एंड लैक ऑफ प्लानिंग इफ देयर. देन कैश क्रंच इज़ द सिचुएशन. ये भी आपका कॉज हो सकता है. लाइक आप फ़ंड को कहीं और डाइवर्ट कर रहे हैं डिलिबरेटली, जहाँ जिसको फ़ंड को यूज़ करना था वहाँ नहीं कर रहे हैं. ठीक है, और वेल इंटेंशनड बट अनवाइज डाइवर्जन आप कर रहे हैं, अनप्लान डाइवर्सिफिकेशन आपका हो रहा है, एंड पुअर कलेक्शंस आपका है, आपने डेप्ट कलेक्शन पीरियड ही आपका बहुत लॉन्ग जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन. अनप्लान पेमेंट हो रही है आपके क्रेडिटर्स की, तो दैट ऑल्सो गिव अ नेगेटिव इम्पैक्ट टू द क्रेडिटर्स. एंड हाई इन्वेंट्री आपकी है, अनप्रोडक्टिव जो है फ्लेम्बॉइंट एक्सपेंडिचर आपके हैं जो आप पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे. तो ये अनअवॉइडेबल एक्सपेंडिचर्स एंड ऑल जो होते हैं हमारे, अनफोर्सिबल जो आपके एक्सपेंडिचर है, दैट ऑल्सो क्रिएट सम टाइम अ प्रॉब्लम ऑफ कैश.
liquidity problem, you can say. Increased cost of raw material, a common cause may lead to sickness of the unit. Increased cost not covered by selling price due to faulty costing. आपकी कॉस्टिंग ही ऐसी है कि आप उसे कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आपकी मार्केट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, हाई मटेरियल वेस्टेज अगर है, हाई मटेरियल इन्वेंट्री कॉस्ट अगर आपकी है, ठीक है, तो दैट ऑल्सो क्रिएट अ प्रॉब्लम। आपने बहुत बड़ा ऑर्डर जो है अपने रॉ मटेरियल का फिक्स कर दिया और इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में आपने फिक्स किया जिस समय कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आई, तो आपके पास जब कॉस्ट ही ज़्यादा हो जाएगी और सेलिंग प्राइस कम रहेगा, प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो यू विल फील अ लॉस। देन इंक्रीज ओवरहेड कॉस्ट, जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनकी कॉस्ट अगर इंक्रीज होती है, लाइक इनसफिशिएंट प्रोडक्शन है, all these arises because of insufficient production, unutilized capacity। आपकी कैपेसिटी 100% यूज़ नहीं हो पा रही है, आपकी मशीन चल रही है मगर वो तो आपके सारे एक्सपेंसेस उतने ही लेगी। अगर आप सपोज कार से जाते हैं, कार जो है 4 सीटर है, तो जब आप कार चलाएंगे पेट्रोल कंजम्पशन तो आप चाहे एक जना चाहे चाहे दो जना चाहे या 4 की 4 फुल कैपेसिटी से जाए, कंजम्पशन तो उतना ही है ना, तो इट इज़ बेटर गो फॉर फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करें। वैसे ही मशीन्स में है, अगर फुल कैपेसिटी यूटिलाइज नहीं करेंगे तो यू और ओवरहेड कॉस्ट विल इंक्रीजेस, and heavy borrowing and high interest charges are there, increased administrative or selling cost is there, unplanned capital expenditure, and new product development or diversifications if you are doing. So all these create increase your overhead cost and expenses. Now the internal cost. In another way you can explain this, internal or external factors. Internal cost which is integral to your organization, like finance and bad production policy you are making, आपने लाइन ऑफ बैलेंसिंग सही से नहीं कर रखी है, आपने अप्रोप्रिएट शेड्यूल नहीं बना रखे हैं, देयर इज अ कंफ्यूजन इज देयर, वेस्टेज इज देयर, एंड मार्केटिंग एंड सिकनेस इज रॉन्ग डिमांड फोरकास्ट आपने कर ली, इन अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट मिक्स आप बना रहे हैं, प्रोडक्ट की प्लानिंग नहीं है, रॉन्ग मार्केटिंग रिसर्च मेथड आप यूज़ कर रहे हैं, बैड सेल्स प्रमोशन आर देयर, all these are the internal costs. Inappropriate your personal management, आपने उनको वेजेस सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अच्छी नहीं है, लेबर रिलेशन इज़ नॉट गुड, आए दिन आपके स्ट्राइक्स होती रहती हैं, ठीक है, बिहेवियरल अप्रोच कॉज डिससेटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स, then ineffective corporate management, bad corporate management, which include improper corporate planning, lack of integrity in top management, lack of coordination and control, etc., may also cause a sickness sickness in the organization, which are very internal to the firm. Now the external cause which are not in the control but they force company to be a sick, like personal constraints, आपको स्किल लेबर्स जो आपको चाहिए वही नहीं मिल पा रहे, ठीक है, मैन पावर नहीं मिल पा रही आपको इंडस्ट्री में, जनरल लेबर इन जो है इन्वेस्टेड इन द एरिया, देन मार्केटिंग कॉन्स्टेंट्स आर देयर, लिबरल लाइसेंसिंग पॉलिसी, रिस्ट्रेन ऑफ परचेजिंग ऑफ बल्क परचेजर और चेंज इन द ग्लोबल मार्केटिंग सिनारियो, एक्सेसिव टैक्स पॉलिसी, market में recession, all these create a marketing constraints which affect our business, एंड प्रोडक्शन कॉन्स्टेंस ऑल्सो कि रॉ मटेरियल ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन कहाँ से कर पाएंगे, या वो बहुत हाई रेट में मिल रहा है तो दैट विल ऑल्सो इंक्रीज योर प्राइजेस, एंड आपको फ्यूल पावर भी नहीं मिल पा रहे हैं या उनके लिए भी हाई प्राइसेस चार्ज हो रहे हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस अगर लग गए, ठीक है, कोटा सिस्टम आ गया कुछ है तो आप लोग नहीं भेज पा रहे अपने प्रोडक्ट को बाहर, तो इट विल ऑल्सो इफेक्ट योर, maybe you can say it is also a cause for your sickness. Financial constraints is there, credit restraint policies, delay in disbursement of a loan, and unfavorable investment, fear of nationalization may also cause a problem. Like you can see, मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट वॉज देयर, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, आपको जो है गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, बट वो सब जो आपने स्टार्ट किया यू स्टार्ट विद योर ओन फंड,
बट आपको वो गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडी इंसेंटिव दे रही है वो आपको टाइमली नहीं मिल पाया, ठीक है। और और जो टाइमली आपको वो नहीं मिल पाया उसकी वजह से आपने हाई इंटरेस्ट में लोन उठाया with the expectation you will get in a 1 or 2 month, but you not get it up to 1.5 years. Then what? वो जो 1.5 years में आपने हाई इंटरेस्ट में उठाया वही आपकी कंपनी को सिकनेस वाली कंडीशन में पहले ले आएगी, क्योंकि आपके पास इतना फंड तो था नहीं उस समय, ठीक है। इंटरेस्ट भी आपको बहुत हाई देना पड़ा, गवर्नमेंट का सपोर्ट आपको लेट मिला। तो जब आपको डिले डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ लोन होगा गवर्नमेंट से, तो उस समय जो पीरियड होता है उस समय आपको सबसे ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ सकते हैं। तो वो एक ऐसा क्रोनिक लॉस बन जाता है, समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू रिवाइव फ्रॉम दैट। You can define these causes with the help of this classification also. External reasons are shortage of financial resources, lack of labor unrest and strikes, lack of demand, change in industrial policy, your poor inventory maintenance, and untimely supply and purchase of raw material, natural calamities like earthquake, food, and now you can say the COVID also, which create a very you can say unfavorable condition to most of the businesses. Various person lost their jobs and all because of all this recession trend also. And these above factors can be broadly classified into government policies, natural calamities, and environmental conditions. Clear? And internal and endogenous, these are mainly due to some internal deficiency you have learned, like management, finance, production policies, etc. Okay. And it is found that majority of the project are found to be sick due to internal reason. हमारे जो ज़्यादातर प्रोजेक्ट फेल होते हैं because of internal reason like poor management, labor problem, and operative problems, poor implementation, lack of sufficient working capital. Basically, these are the major reasons because of which major projects will uh, suffer. Clear? Then types of sickness occur at every stage of your company. हर स्टेज में आप लोगों की सिकनेस हो सकती है, ये नहीं कि आप लेटेस्ट स्टेज पे तभी आपकी सिकनेस हो रही। नो, द फर्स्ट स्टेज इट हैपन ड्यूरिंग अ प्लानिंग एंड कंस्ट्रक्शन स्टेज। अगर आपने प्लानिंग ही गलत करी, ठीक है, द यूनिट में बी लोकेटेड एट अनइकोनॉमिकल लोकेशन, अडॉप्ट इनसफिशेंट इनफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन। आपकी प्लानिंग ही गलत है, आइटम ही आपने गलत चूज़ किया, तो भी हो सकता है आप फेलियर फेस करें। सेकेंड स्टेज में जहाँ आपने कुछ मिस्टेक्स करी, लाइक रिक्रूटमेंट में, आपने ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स में, ठीक है, एट दैट टाइम ऑल्सो it also create a sickness. It cannot be corrected easily at the late hours. Then third stage, it may arises even if the unit is full swing. आपकी यूनिट जो है समय जो है अच्छी चल रही है, उस समय भी अराइज हो सकता है ड्यू टू द डिमांड ऑफ प्रोडक्शन विच माइट हैव चेंज्ड। न्यू टेक्नोलॉजी आपकी आ जाए, आपके कॉम्पिटिटर्स आ जाए मार्केट में, उस समय आपका प्रोडक्ट फेल हो सकता है जिस समय आपके मार्केट में डिमांड चल रही थी। देन स्टडी शोज दैट स्मॉल स्केल यूनिट्स आर मेनली सिक ड्यू टू exogenous causes, whereas endogenous, you can say internal causes play important role in making a large unit sick. तो जो स्टडीज़ हुई हैं वो क्या कहती हैं, जो सिक यूनिट है, आपने अभी खुद एग्जाम्पल देखा है कि कोविड एरिया में भी हमारी जो सिक हुई हैं स्मॉल स्केल्स यूनिट्स, वो क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एक्सोजीनियस एक्सटर्नल कॉजेज़ की वजह से हुई, लाइक कोविड की वजह से, क्योंकि डिमांड ही ख़त्म हो गई, ठीक है। बट बड़ी यूनिट्स जो होती है, क्योंकि दे हैव अ सफिशिएंट फंड टू मैनेज इट, दे हैव अ प्लानिंग, ठीक है, बट वो अगर फेल हो रही हैं तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर, वो अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से फेल हो रही हैं, ठीक है, इंटरनल मैनेजमेंट की वजह से फेल हो रही हैं। एंड स्मॉल यूनिट्स आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट
withstand with the fluctuation in the market and frequent change in the government policy, market policy. They work with a very small margin of profit. As such, even a small error make them sick, and due to this, small units are highly prone to sickness. Clear? Why the units are sick? This is all about the sickness for today. Thank you, students.